Islamabad. Before we start tafsir, little bit of Kaarguzari. Hafiz Muhammad Bandor said plain Guzari, not Kaarguzari. Chalo, whatever you want to say, call it plain Guzari. Kaarguzari is Urdu word. It means जो कुछ कारकर्दगी, जो कुछ कामकाज, जो कुछ हुआ, उसका थोड़ा सा अकाउंट. जैसे जमात में से जाकर आते हैं तो कारगुजारी सुनाते हैं, तो हम भी 3.5 हफ्ते ये दिन के काम में ही जाकर के आए हैं. तो little bit of I mentioned in Urdu yesterday, but some friends said मुफ्ती हयात साहब मेंशन, मौलाना साहब इंग्लिश में भी कारगुजारी करेंगे ना. मैंने कहा चलो इंशाल्लाह करेंगे. मौलाना बिलाल इसाक जी ने भी पूछा कि अब मौलाना साहब इंग्लिश में, मैंने कहा फिर मैसेज भेज दिया इंग्लिश कारगुजारी. तो अल्लाह की मेहरबानी से वी लेफ्ट फ्रॉम हियर ऑन द 21st of December and returned on the 14th of January. A 3.5 weeks journey. First, we went with Hazrat Aqdas Maulana Bilal Sahab Damat Barakatum Maddafiyuzum Allah Maratibahum to Bangladesh. And Bangladesh is Bangladesh, mashallah, nearly 200 million people, nearly 100% Muslims, mashallah. And you can see, alhamdulillah, there is dindari there, people praying namaz. And the area we went in, Silhet, Shahbagh, mashallah. Shahbagh is about 1.5 hours from Silhet city. Madrasa, very big madrasa, mashallah, 2,000 students. There is one building of Yatim Khana, only Yatim children there. And 450 Yatims staying there. And 500 girls also studying there, alhamdulillah. Girls का आना जाना है, मगर boys जो हैं वो दारुल इकामा है, boarding है, उसमें रहते हैं. And boarding is still under construction. Hazrat Maulana Bilal Sahab Damat Barakatum Maddafiyuzum Allahu Maratibahum, along with LIA charity from Leicester, helped a lot in there. Mashallah, building में. और काफी अच्छा कुशादा मदरसा. I sent video on the group as well. Some of you might have seen it on the group. So it was their 50th Salana Jalsa. So they celebrated it very well, alhamdulillah. Invited lots of people, lots of speakers, mashallah, alhamdulillah. So I mentioned yesterday, we traveled from Manchester to Sylhet direct flight. And flight was late from here by 3 hours. So हमारी जुम्मा मिस हो गई वहाँ. We were supposed to get there maybe 12:30, 1 o'clock, and it's about 10 hours flight and 6 hours time difference. So we got there in the afternoon, roughly 3:30. So we just quickly came out and prayed our Zohar 2 rakats with Hazrat Maulana and his 2 sons, Maulana Yusuf and Maulana Mufti Salman. There was 4 of us. We prayed our Zohar namaz, collected our luggage, and we were taken, to VIP, where the MP and the main person of the airport was there as well. So because of Chaudhry Sahab, he hosted us coffee and biscuits and drinks. And then we went with Chaudhry Sahab from the separate gate from VIP side to Chaudhry Sahab's house. And we had some lunch over there. And then we moved on to Shahbagh. We got there by nightfall. It was all dark. माशाल्लाह लाइट्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा मदरसा घूमे. बड़ा हौज है और मतबख किचन और कुकिंग फूड तैयारियां सब हो रही थी for the following day, next day. And masjid, mashallah, very big masjid. We walked around and then we had something to eat, fell asleep. Next day we went around the masjid. Fajr wahi masjid mein hi padhi. Or I think next day was Christmas day. And Hazrat Maulana used to tell me to lead Fajr. So it was Christmas day, so I read was Fil Kitabi Maryam, Idin Tabazat min Ahliha, Hazrat Isa alayhi salam's birth in Fajr namaz. And mashallah, lots of students, whole masjid was full. Lots of ulama came because of Hazrat. And mashallah, good majlis. Then after Nashta, we went around seeing, as I mentioned yesterday, fishery, lots of fish, mashallah. And then bakriyan, goats and cows, and mashallah, very nice big plot. And
We came back in the evening after visiting everything. Then there was some Islahi majlis with ulama, and Hazrat told me to go and speak. He wasn't feeling so well. So I had to sit with the ulama kiram and talk for about 45 minutes or something. Then they called us over that Hazrat is coming to the stage, so everybody come to the stage. So we got out of the masjid, went onto the stage, and then there were lots of people there as well, alhamdulillah, which is behind the masjid. And they were testing, someone read Qiraat, and they told me to continue the bayan there. I said, no, I've done my bayan in the masjid, and read some nazam. So I read 2 naats there, alhamdulillah. मजा आ गया, हमको भी मजा आया, बांग्लादेशियों को भी, they loved the naats, alhamdulillah. Everybody loves naats, even if you don't understand the meaning properly, but you like the tune and it's nice, alhamdulillah. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खाना वाना खा के दूसरे दिन फिर वो जलसा वलसा बराबर बाकायदा शुरू हुआ. बयान 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 बहुत उलमा, बहुत इनवाइट, तकरीबन 60 उलमा को इनवाइट किया था. बयान ही बयान, थोड़ा थोड़ा बयान, थोड़ी थोड़ी देर बाद बयान, बांग्लादेशी में बयान. And among them 2 speakers stood out, one Riyazul Kareem and the Habib Arif or something. माशाल्लाह बहुत जोशीला, बहुत अच्छा बयान किया उन्होंने, वेरी गुड बयान. जलसा खत्म हुआ और I came back. I had my flight was one day earlier, so I came to Sylhet. Did a bit of shopping here and there for kids and family. Hazrat Maulana brought my saman, some burqa and jubba and things like that. For our madrasa ladies, we brought some long burqas as uniform. कि अब से आपा जो है वो वहाँ से लंबे बुरखे पहने तो उसमें जरा पर्दा वगैरह अच्छा रहे. Hazrat Maulana brought them. We give them out from tomorrow, inshallah. We'll be using that uniform, inshallah. तो ये भी ले आए, इस तरह कुछ चीजें ले आए. वहां से फिर वी वन मूव्ड ऑन टू मलावी. तो मलावी सफर, Africa safar, first time in that area, Malawi and Zambia. I went to South Africa once with Sheikh Yunus Sab in the year 2000. So we stayed for 1 week, but we were, Sheikh Yunus Sab के साथ है साथ हर वक्त every minute with Sheikh Yunus Sab. कहीं इधर उधर छटक नहीं सकते थे. So we never saw anything, just Sheikh is running around all the time. So don't know anything about South Africa, just some memories. But this time, alhamdulillah, in Malawi, then Zambia, then South Africa. In Malawi, the main suffer was because of our Hazrat Yusuf Bhai Dana, Haji Yusuf Dana Sahab Hafizahullah. They have constructed a masjid there, nearly long way. So sort of iftitah and opening ceremony or make dua and visit everyone there. Yusuf Bhai got happy as well. So that was the purpose of the safar. As we land in Malawi, we have to go through the formalities. Good job. Our friend Faraz Bhai Chunara was with us and he went through all the formalities, made things easy. You have to take visa. Even though we have British passport, you have to pay $50 and take visa. Faraz Bhai paid that and alhamdulillah we moved on. Maulana Arif Isa Saab and his friend came to receive us in 2 cars. And mashallah, Maulana Arif Saab is doing a lot of good work there, alhamdulillah. He is working with the Tabligh Jamaat as well. Also, he's got Darul Uloom there. He's got some ulamas, Jamiyat type of, work as well. So he's doing lots of stuff, building masajid. So he is the one who took the, initiative of this masjid of Yusuf Bhai Dana Sahab. And he was there to receive us. And we went to Yusuf Bhai Dana's brother-in-law's house, Ahmad Bhai Chunara. So we were going to stay there, mashallah. Nice house, very relaxing, and mashallah, very good. They were very hospitable towards us. Stayed there, alhamdulillah, met everyone. In the evening, there was dawat. They had invited about 60, 70 ulama and other leaders, and we enjoyed dawat. And then we had a light-hearted discussion with the ulama kiram. And next day, alhamdulillah, we went to visit the masjid. Long drive. We went there. And mashallah, very nice masjid. Beautiful. बहुत बड़ी है. हबशी हजरात सब हमारे इस्तिकबाल के लिए लाइन लगा के खड़े थे.
वो वीडियो आता है ना, वो मौलाना बिलाल साहब जब वहां पहुंचते हैं बांग्लादेश, सलामुन अलैकुम तिब तुम, तो यहाँ पर इस तरह हबशी दे और स्टैंडिंग दे, और वो इन हबशी लैंग्वेज, इन चिचेवा, they were singing songs. I said, ये क्या, what are they singing? They say they are welcoming you. That welcome, thank you for coming. मैंने कहा चलो माशाल्लाह, ये हबशी लोग बेचारे, उनको अच्छा लगता है। इसीलिए फिर वो मैंने मस्जिद में जब बयान भी किया ना, तो हबशियों से वो या अल्लाह या रहमान पढ़वाया, नशीद which Maulana Hanif Shikari Shahid Rampuri, he used to sing and he used to make this everybody engage with him. So Alhamdulillah, the Habshis enjoyed that nasheed. In the masjid, we did a short bayan, importance of masjid, shukriya for the masjid, and remembering Allah. Where did this nasheed? Asma'i Husna. Whenever you need something, read Asma'i Husna and ask from Allah, and Allah will fulfill your need. वहाँ आप हबशी बैठे हैं, मर्द आगे बैठे हैं, पीछे लेडीज बैठी हैं, ध्यान से सुन रही हैं माशाल्लाह, एंड बहुत अच्छी लाइवली मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी वॉकड अराउंड द मस्जिद एंड नाइस बिग मस्जिद, इमाम्स हाउस, तबलीग जमात का अलग रेजिडेंस हाउस वगैरह, अलग उनका वजू खाना और गुसल खाना वगैरह, एंड माशाल्लाह दिस मॉर्चुरी, गुसल खाना, गुस्ल मय्यत, and every facility is there alhamdulillah. In fact, in that area it's thought to be the largest facility. Tabligh Jamaat in the neighborhood areas would come there and relax, because in Malawi, because there's ghurbat, so when you go in Tabligh Jamaat you don't get proper facilities. Na pishab khane ke ठिकाने हैं, ना गुसल खाने के ठिकाने हैं। अब बेचारा तबलीग जमात go through very rough time, because facilities नहीं है, लेकिन बहुत मुजाहदा है, कुर्बानी है, फिर भी लोग जमात में जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने they've made this very nice facility for the whole area. तबलीग जमात come here, relax for a few days, work from this area. So alhamdulillah, Yusuf Bhai, Dana and his family, they will all get the sawab for it. MashaAllah, Malawi has a population of 21 million and 9 million are Muslims, about 40%, because Islam was in that area from early days. Sahaba Tabi'in, Tabi Tabi'in days, who conquered Africa. So Zanzibar, Tanzania, Mona Salim Desai was mentioning yesterday, Tanzania is 90% Muslim. So Senegal, Mauritania, West Africa, that's the coast. After Mauritania, Africa finishes. And then comes America. They say Christopher Columbus ने डिस्कवर किया था, उससे पहले इब्ने बतूता पता नहीं किस किसने कर लिया था, तो बाद में ये पहुंचे हैं वहां, वरना पहले से मुसलमान वहां पहुंच चुके थे। और इंडियंस वहां हैं, रेड इंडियंस, उन्होंने वो भी वहां पहले से रह रहे थे। एनी हाउ, अफ्रीका का जो है ये है, अफ्रीका तो 500 ईयर्स अगो डिस्कवर हुआ है, अफ्रीका वहां तक जाता है। देयर ऑल मुस्लिम एरियाज अल्हम्दुलिल्लाह, आल्सो मुस्लिम देयर। Malawi has the most Muslim among these three countries, Zambia and South Africa. Malawi में सबसे ज्यादा मुसलमान है। और माशाल्लाह हमारे जो गुजराती मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास, सबके पास तकरीबन बिजनेस है और वेल ऑफ है, अल्लाह पाक ने उनको अच्छी हालत से नवाजा है। मलावी में उनका सरनेम से नहीं पुकारते हैं, उनकी दुकान के नाम से उनको पहचानते हैं। मसलन क्या है, अहमद भाई की दुकान का नाम मैं भूल गया, तो वो जो दुकान का नाम होता है वो उनका सरनेम होता है। तो सब बिजनेस में है, हालत भी अच्छी है। आई मेंशन्ड यस्टरडे दैट दे ऑल हैव देयर प्रॉपर्टीज इन लिलोंगवे, एंड फ्रॉम देयर 2 hours ड्राइव इज अ लेक Malawi, and they have properties on the lake Malawi as well. So in weekend, Saturday, Sunday, relaxation के लिए वहाँ चले जाते हैं, और वेदर भी अच्छा है, रिलैक्स करते हैं, वापस आ जाते हैं फिर अपना समझिए कामकाज करने के लिए। होना चाहिए ऐसे। मैंने कहा मेरे पास पैसा हो तो मैं भी स्कॉटलैंड में घर ले लूँ, 2 दिन वहां चले जाएं रिलैक्स करने के लिए, लेक डिस्ट्रिक्ट पे ले लें, लेक डिस्ट्रिक्ट पे चले जाएं वहां रहने के लिए, रिलैक्स करने के लिए 2 दिन, टेंशन वेंशन खत्म। अल अशबाह व नसाइर में मसला लिखा है कि इमाम should be given 1 week holiday in 4 weeks for relaxation. He will work 3 weeks and 1 week he just enjoy, relax and get energy. हमको तो कोई छुट्टी देते ही नहीं है, छुट्टी में भी काम करते हैं हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है, हमको अच्छा लगता है। एनीवे, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दे गो टू रिलैक्स। वहाँ पर मौलाना आरिफ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दारुल उलूम है अल महमूद के नाम से, वेरी क्लीन, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड।
इसी तरह वहाँ लीमो है, तो ये लोग साउथ अफ्रीका से जो हमारे मियास फार्म वाले हैं और वो सब मिल करके चलाते हैं। इब्राहिम भाई चुनारा उसके जिम्मेदार। एंड वी वेंट टू अ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, there's about just under 100 girls there. Went to his boys madrasa, residential, 220 boys there, and they have makatib, 450 makatib they're looking after, and they're always busy. This is their work, day in, day out, visiting here and there, and mashallah, looking after all the makatib. They have 30, 40 makatib and one zimmidar looking after them. Another 30, 40, 50 and one zimmidar. And then all zimmidars working under one person. Pagar, tankha, waghaira, everything is given by, mashallah, Muslims. And they're doing really good work, mashallah. May Allah accept their efforts and give them more barakat. Reward Ibrahim Bhai Chunara and his family and all those who are looking after these things. And Maulana Arif Saab, Darul Umm Mahmood, 150 students, all residential, Shafi students. They teach them Shafi fiqh. Maulana Saab ने बहुत अच्छा सब system बनाया है, about 10 acres land, all spread out, well spread out. They're all fruit trees. He mentioned that Maulana Abdullah Kapodravi Saab came. He looked around the madrasa. He said, "There's one thing missing here. There's no fruit tree here." And he brought one fruit tree himself and said कि यहाँ लगाओ और भी fruit के झाड़ लगाओ. Now you get every fruit there, mangoes, anus, और पता नहीं क्या क्या खजूर and whatever. They've got all different types of fruit trees there. Or season में they get lots of fruit, or every day they feed the fruit to the kids, mashallah. So they get different fruits in the season, free from madrasa. So Maulana Abdullah Sahab went there, stayed there for few days, and he liked it, mashallah, and gave some hidayat there as well. Then next day, we went to Salima. Salima is the name of that, lake, Malawi, where they have their resort. So Ibrahim Bhai Chunara's house, he's one of the first to buy a house there, long time, and he goes there regularly. There's madrasa there as well, looks after that madrasa. We stayed at his place on beach side, very relaxing. लेकिन उस दिन हमारा नसीब अच्छा नहीं था, रेन बहुत थी, टू मच रेन. रात को 1 बजे धड़ाधड़ खटाखट खटाखट थंडर एंड लाइटनिंग एंड बारिश शुरू हुई. ठंडक बहुत हो गई उससे, वेरी नाइस कूल. लेकिन दैट बारिश रेन कंटिन्यूड throughout the night and then throughout the day until midday, 12 o'clock. So we went around, but we did not get the chance to go in the water. So after Zohar, when the rain stopped, फिर हम भी थोड़ी देर पानी में चले गए. हमारे लिए 3/4 ले आए और टी शर्ट ले आए, पहन के हम भी पानी में 8-9 घंटा पानी में, बहुत अच्छा लगा. और स्वीट वाटर, दरिया का पानी तो सॉल्टी है, दिस वाज स्वीट वाटर. तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड. लेकिन स्वीट वाटर में इतना है कि फ्लोटिंग, यू कांट फ्लोट ऑन स्वीट वाटर. ऑन सॉल्ट वाटर यू कैन फ्लोट. तो हमको स्विमिंग नहीं आती है, फ्लोट करना आता है. तो खैर वहां पर थोड़ी देर पानी में रहे और काफी अंदर चले गए थे, बिकॉज इट वाज शैलो. तो बहुत अच्छा लगा पानी में, रिलैक्सिंग. वेदर भी वाज नाइस, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड. एंड उसके बाद फिर आ गए. फिर उसके बाद जुम्मा का दिन आया, तो वी हैड जुम्मा बयान इन जुम्मा मस्जिद. अब we went around all other places where कितना याद रखे. उसके बाद जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस, गुड क्राउड. हबशी भी बहुत थे, अपने देसी भी बहुत थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा बहुत अच्छा रहा. उसके बाद वहाँ और उलमा किराम, मौलाना इदरीस साहब से भी, मौलाना सईद साहब से मुलाकात हुई. उनके मदरसे में भी गए थे दुआ करने के लिए. वो भी मदरसा तो चल रहा है, 500 स्टूडेंट्स. They bought another place. They're building new project over there. Allah make it easy for them. He's one of the senior ulamas there. When we got Farigh from there, we left. Ahmad Bhai yaad aate hain. We said to Ahmad Bhai, you gave us all fruits, mangoes, but you didn't give us bananas. Come on, yaar, Zambia ka banana खिलाओ, कैरी खिलाई, केरू नहीं खिलाया. खैर जोक करते रहे उनके साथ. अहमद भाई बड़े अच्छे हैं और माशाअल्लाह भोले भाले हैं. दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी, उनको भी हमसे, हमको उनसे मोहब्बत होगी. We used to do zikr every day in one of the masajid. अहमद भाई भी हमको ले जाते थे, ड्राइव करते थे, जिक्र में बराबर बैठते थे. हालांकि बेचारों को सुबह 8 o'clock you have to go to work, लेकिन 5 o'clock half 4 we used to go to the masjid, थोड़ा सा बयान, जिक्र, घंटा 1.5 घंटा. बेचारे he used to sit
और बराबर जिक्र में उनको बहुत अच्छा लगता था। जिक्र तो जिक्र है, अल्लाह का नाम है, जिक्र किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम, जिक्र मजलिस वगैरह सब वहाँ पर बराबर रहा। देन वी लेफ्ट फॉर ज़ाम्बिया। So when you leave Lilongwe, about 1.5, 2 hours drive, you just cross the border, and 15 minutes you're in Chipata. This is where Maulana Abdul Rahim Mutala Sahib Rahmatullah Ali used to normally take flights to Lilongwe. From there, Chipata is close. Very seldom he used to go to Lusaka. From Lusaka to Chipata is about 6-7 hours drive. तो लंबी ड्राइव है, इसीलिए हमने ड्राइव नहीं की, फ्लाइट ले ली थी हमने लुसाका। एनीवे चिपाटा पहुंचे, महादुर रशीद मौलाना अब्दुल रहीम साहब का मदरसा, there's about 300 students there अल्हम्दुलिल्लाह। दोहरे की तालीम भी है। मौलाना अब्दुल रशीद मुताला साहब बुखारी शरीफ भी पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, and he's doing lots of effort. We saw some young ulama graduates who are working in Mozambique, and they had come because of the holidays. They'd come to stay in the madrasa for a few days. मैंने कहा माशाअल्लाह you're doing good कि अपने फारिगीन graduates को you call them over, keep them here, तबादले ख्यालात, you know, training वगैरह. Also they had brought in one Arabic ustad from Mauritania, Arabic sheikh, he had nice imamah on and very वक़ार के साथ, and he was teaching the students Arabic and Arabic only. तो उससे स्टूडेंट का बहुत फायदा हो रहा था। मालूम हुआ मदरसा अच्छा तरक्की कर रहा है। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब अपनी अच्छी लेगेसी छोड़ गए हैं। We visited Maulana Abdul Rahim Saab's mazar as well, and mashallah there's Maulana Abdul Rahim Saab Mutala there, Maulana Riyazul Haq Saab, Hazrat Maulana Islam Haq Saab's son-in-law is buried right next to Maulana Abdul Rahim Mutala Saab, and Hazrat Maulana Islam Haq Saab's ke ghar mein Khala Jan, she's there as well. So Hazrat Maulana and Khala Jan went to visit their daughter, and she passed away in Chipata. So he's buried in that Qabristan as well. We visited her Qabr as well. So in the Qabristan, there's lots of others. Yunus Bhai Daya's Walid Sahib is there as well, who was very close to Hazrat Maulana Abdul Rahim Sahib. And he is the one who said to Maulana Abdul Rahim Sahib, कि मदरसे यहाँ बनाओ. So Maulana Abdul Rahim Sahib went there, stayed there for a few days in Ramzan, and he liked the mahal, he liked the people, and then he made the madrasa over there with the mashwara of Hazrat Sheikh Rahmatullah Ali. And Hazrat Sheikh visited that madrasa as well. Hazrat Sheikh stayed there. They showed us where Hazrat Sheikh Rahmatullah Ali stayed, and Hazrat Sheikh's barakat and his du'as for Maulana Abdul Rahim Sahib's madrasa. And we can see the effect of those du'as. May Allah take the madrasa from strength to strength and provide for the madrasa. We stayed at Sayyid Bhai Dana's house, and then Shiraz Bhai, Sayyid Bhai, they were our hosts, and they arranged everything for us. Alhamdulillah, we had dawats there as well. Yaqub Bhai के घर हम ठहरे थे, रात सोए थे, उनके यहाँ नाश्ता था। एक ही दिन we only stayed there for 24 hours. इशा बाद जुम्मा मस्जिद में बयान था, माशाल्लाह काफी लोग जमा हो गए थे, वहाँ जुम्मा बाद बयान हुआ, और उसके बाद सबसे मिल मिला के next morning we left from there. One thing I noticed there was, you know, their kids, they speak Gujarati very well. मैंने कहा यार तुम्हारे बच्चे गुजराती बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कहा हम तो घर में गुजराती ही बोलते हैं। ये अच्छा है। एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उसका थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिया, मैंने अपनी फैमिली ग्रुप पे भेजा कि देखो ये बच्चा कितना अच्छा गुजराती बोलता है। And if you preserve your language, then your culture will be preserved as well. If you lose your language, your culture is lost as well. तो हमारे घरों में तो हमको गुजराती ही बोलना चाहिए। We had a meeting, and I was really tired. But ulama said, we want to have a meeting with you. Said, no problem. So after Isha, we sat down with some young ulama. And the main point of discussion was about ta'lim, maktabi ta'lim. Maulana Zakir Sahib, I think Maulana Zakir Kothia, he was talking about Maulana Sahib, should we teach in English or should we keep teaching in Urdu? I said, no, don't let Urdu go. Urdu mein hi padhao. We in England lost our Urdu and we are losing out. अगर नहीं, don't let go of Urdu. आप सही कर रहे हैं, एक्सप्लेन इंग्लिश में करो, लेकिन उर्दू में ही पढ़ाओ। उर्दू में ज्यादा फायदा है, उर्दू में अदब है, there is respect in Urdu language. In English you will say you. In Urdu, for a younger person you will say tu, but for an elder person you will say आप. आपने ये फरमाया, आप ये कहे. There is adab in there. And other stuff as well. Urdu language is vast, versatile. I said in Urdu there's lots of ilm. You know, main ilm is in Arabic.
Then number two, it's in Urdu. In English, there's very less ilm. And I told them, Maulana Zakir Sahib, that, I went to Uzbekistan, end of October, first week November. And we saw a Kutub Khana bookshop, and in there were Urdu books. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi's Khutubat, Maulana Mufti Taqi Usmani's Khutubat, and other Urdu kitabs, right? Fatawa in Urdu. So we asked them, यार ये उर्दू किताबें यहाँ उज़्बेकिस्तान में क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा कि we teach Urdu as a language over here and we benefit from your books. This is in Uzbekistan, in Tashkent. So they have nothing to do with Urdu. Their background is not Urdu, but they teach Urdu in their college, in their uni, and in their madrasa as a second language, and they benefit from our Urdu kitabs. Whereas over here in England, our background is India, Pakistan. We know Urdu, but we ourselves shot ourselves on the foot, and we've lost Urdu, and we're losing our generation. Even over here in madrasa, we have to teach in English. अब ये बच्चे हैं, they get very minimal knowledge. जो तरबियत होनी चाहिए, it's not as we desire. लेकिन we have no other choice. We teach them little bit of Urdu in the first, second year. We would love to teach everything in Urdu, but we can't. Even in Darul Ulooms as well, we have to explain in English now. But that should not be the case. Urdu should be held strongly, and we should teach in Urdu. I said, don't let go of Urdu. Just use your Urdu and teach your Maktabi Talim in Urdu as much as you can. And they, mashallah, they said, inshallah, we'll try our best. Then, after all that, one day in Chipata, very long day, next day, we went for a bit of relaxation to the safari park, game. Or wahan lions, leopards, hyenas, giraffes, elephants, zebras, impalas, सब एनिमल, वाटर बक्स, कुडू, मंकीज, पता मंकीज तो हर जगह दौड़ते हैं, घूमते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, बट नो डैमेज. हमारे यहाँ सफारी पार्क में तो वो आके तोड़ जाते हैं ना, वाइपर वगैरह. वहां मंकी हमको देख के भागते हैं, हमारी गाड़ी पे नहीं आते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन कार, और लाइन हमारे साथ चल रहा है, लेपर्ड चल रहा है, वो एलिफेंट वहां है. हमारे अयूब भाई डाया जो है, वो जानबूझ के यूं गाड़ी को मारते हैं. मैंने कहा यार मार लेगा एलिफेंट, कहीं कुछ नहीं होगा, वो आवाज करेगा तो मजा आएगा. मेरे को छोड़ो नहीं यार, हमारी आवाज छूट रही है, भागो यहाँ से. तो वो अयूब भाई जो है माशाल्लाह बहुत एक्साइटमेंट कराते थे. अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं, अल्लाह उनको शिफा सेहत से नवाजे. तो ये वहां ये देखने के लिए गई. अल्हम्दुलिल्लाह वहां 2 दिन रहे शायद हम, लेकिन बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह. उन्होंने शिराज भाई दाया, अयूब भाई दाया, यूनुस भाई दाया, बेचारों ने सईद भाई दाना, यूसुफ भाई दाना, इन सब ने मिल करके वो पूरा एक रिजॉर्ट जैसा है. फिरोज भाई को अपने मुसलमान भाई हैं, उनका है, वो उन्होंने 2 दिन के लिए हायर कर लिया था कि यहाँ कोई और ना हो, जस्ट अस, नोबडी एल्स. सो देयर इज 4 लार्ज हाउसेस, वी स्टेड देयर. पूरा सफारी पार्क में खाने का अलग है, फिर वहां नमाज पढ़ने का, जिक्र करने का. मुझे तो वहां जिक्र करने में बड़ा मजा आया, क्योंकि बर्ड्स की चर्पिंग हो रही थी, और वहां बैठ के वो लेडीज भी आके पीछे सोफे पे बैठ जाती थी. वहां आगे हम नमाज पढ़ते, वहां जिक्र करते थे. लेडीज को भी बहुत एंजॉय हुआ जिक्र में अल्हम्दुलिल्लाह. यूनुस भाई भी और हमारे यूसुफ भाई भी, अयूब भाई भी, सब ने. तो जिक्र, अल्लाह का जिक्र जब करते हैं तो ये परिंदे जो हैं, बर्ड्स, दे आल्सो बिगन टू चर्प वेरी लाउडली. अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफेक्ट पड़ता है उसका. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर समझिए कि रहे हम 2 दिन. उसके बाद वहां से वी गॉट अ फ्लाइट टू लुसाका. अब लुसाका में मौलाना जकी नदात एंड हिज कजन मौलाना, आई थिंक मुफ्ती हुसैन लंबाट, और ही केम टू पिक अस अप. मुफ्ती हुसैन नदात, his cousin, Nadat, they both came to take us. We stayed at Maulana Zaki's house, Yusuf Bhai Nadat's nephew, very nice house. मैंने कहा जकी घर तुम्हारा बहुत अच्छा है. उनका मैंने खुद बनाया इसको डिजाइन करके. मैंने अच्छा डिजाइन करते हो माशाल्लाह. 3 मकान हैं, एक उनके वालिद का, हाँ, दूसरा उनका, तीसरा उनके भाई का, और बीच में स्विमिंग पूल भी है, और फार्म ट्रीज भी हैं, और भी दरख्त हैं, फ्रूट की भी, पार्किंग भी काफी कुशादा है. तो हमको उनके भाई जो हैं
वो इंडिया गए हुए थे, घर खाली था, तो हमको उनका घर दे दिया था. We stayed in there. Used to buy on the I stayed on the upper floor, and mashallah, very nice house. Next day, we went visiting around lots of masajid, alhamdulillah. Our Fajr namaz and zikr majlis was fixed in Masjid Umar. So, al 4 दिन रहे, all 4 days zikr majlis, alhamdulillah, in Masjid Umar. I used to do short 15-20 minute bayan and then zikr majlis. Then we visited Jamia Zainab. We did Khatme Bukhari, Khatme Tirmizi, Khatme Abu Dawud there. We visited Jamia Islamiyya. There is Maulana Yusuf Saikalwala, Maulana Idris Gangat, and Mufti Ayyub Bobat. है ना, मुफ्ती अय्यूब बोबात ही है ना उनका नाम, कुतुब खाने के जिम्मेदार है, तो नाम भी भूल जाता हूँ सबके. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मदरसा भी देखा, प्रोग्राम बयानात, we did बयान among the students. और से स्टूडेंट्स तो मुझको जानते हैं यूट्यूब से. वो जानते हैं, वी नो यू मौलाना साहब, वी वॉच यू. मैं कहा चलो माशाल्लाह अच्छा है, फायदा हो रहा है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वेंट अराउंड. और लुसाका में माशाल्लाह मस्जिदें बहुत बड़ी बड़ी हैं. एक मस्जिद तो मेन रोड पे, जो एयरपोर्ट से द मेन रोड, उस पे एक मस्जिद तौहीद. और उसके जो दी मुतवल्ली साहब ऑफ दैट मस्जिद इज आवर पॉसेस ब्रदर. क्या नाम है उनका, मुझे भूल गया है. यूनुस, हनीफ होगा. हाँ, हमें लगे उसके घर, बड़े घर हम गए थे, तो बड़े भाई हैं. मैंने कहा कि ये मस्जिद माशाल्लाह, कहने लगे कि वी टूक परमिशन, लेकिन वो नहीं दे रहे थे. 10 साल तक ऐसे ही पड़ी रही, वो रिफ्यूज करते रहे. बहुत इश्काल, ये वो, नो यू कांट हैव इट, इट्स ऑन द मेन रोड, वी डोंट वांट इट देयर. प्रेसिडेंट पे प्रेसिडेंट बहुत सिफारिश वगैरह. यूनुस भाई कहने लगे कि मौलाना साहब, no matter what you do, what sifarish you do, no matter how many appeals you do, until Allah subhanahu wa ta'ala does not allow and permit, nothing's going to happen. So it was deadlocked 10 years. Then suddenly one day, I get a call from president's office. The previous president who refused, he had died, and another president came. And he used to sit with our Asians, and he had lots of connection, friends among our Asians. So I don't know who told him, but I get a phone call from there, and he said, this masjid project, are you going to go to the court? I said, no, we're not going to go to the court. It's Allah's house. When Allah wills, it happen. He said, well, it's okay then. I'm going to give you the permission to build it. I'm only here for 7 months. Within 7 months, you should build the masjid. Otherwise, someone else will come, he might stop you. और कहते हम आए और लग गए उसके पीछे, और पैसे तो थे ही. विदिन 7 months वो इतने महीने में वो मस्जिद खड़ी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह. नाइस ब्यूटीफुल लार्ज मस्जिद, माशाल्लाह, लॉट्स ऑफ पार्किंग, गार्डन, everything, and it's on the main road. Whoever comes to Lusaka and he goes from airport, he passes by that main road, and he sees the masjid, alhamdulillah. So mashallah, we used to pray our namaz there, and the Imam Sahab was there, is from, I think, Tanzania, and very nice qiraat. He's a Shafi Imam, so he reads with Bismillah and then he starts the qiraat. So we used to pray in Masjid Tawheed. Then we had bayans elsewhere. Our Jummah was in the Jummah Masjid of Lusaka. Very good masjid, big masjid. There were lots of our, Gujaratis and all elders as well, old mashayikh, Buddhas as well, mashallah. बयान भी हुआ, जुमा भी हुई. बहुत आगे फिर जुमा बाद सब बड़े बूढ़े जो हैं खुश हो गए, मुलाकात करने लगे, मुसाफा, मुआनका, हगिंग, मौलाना जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच. मुझे भी अच्छा लगा कि बूढ़ों की दुआएं लेते हैं तो अच्छा लगता है. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लुसाका में रहे, बहुत अच्छा लगा. अल्लाह का लाख लाख शुक्र. मकैनी जाना हुआ, वहाँ इब्राहिम भाई बोबात के लंबात इब्राहिम भाई लंबात का घर, उनकी बेटे हैं मौलाना मोहम्मद लंबात, उनके घर दावत थी. दावत खाई, फिर दिखाया कि ये हजरत शेख came here and stayed in this room. So we visited that room where Hazrat Sheikh had stayed for 2 days. And outside there was a big compound, and they had built a tent there, and people used to come and sit there. Hazrat Sheikh's majlis,
and zikr and everything used to take place there. मैंने कहा उसकी बरक़ात हैं, तो हमने फिर वहाँ we prayed यासीन ख़त्म, and we did Isal Sawab to Hazrat Sheikh Rahmatullah alayhi and all the Khulafa who were there. You know, he said in this room, Mufti Mahmudul Hasan Sahab and 4 other Mashayikh were there. Maulana Abdul Jabbar Azmi Sahab, Maulana Muinuddin Muradabadi Sahab. In the other room, Maulana Munawwar Hussain Sahab Bihari and Maulana Abdul Rahim Mutala Sahab and Maulana Yusuf Mutala Sahab and others. And in the third room, so and so. So all big Mashayikh, bhai. Hazrat Sheikh Khulafa. So they all, mashallah, stayed there. We visited that place. ये भी है, विजिट करना चाहिए मशाइख जहाँ रहे हों. मौलाना मोहम्मद लंबात साहब ने दावत भी बहुत अच्छी की थी. और ये एरिया मकैनी कहलाता है, और वो मदरसे दोनों हैं वो मकैनी के एरिया में ही है. मैंने कहा ये हज़रत शेख की बरकत है. जामिया ज़ैनब भी, जामिया इस्लामिया भी, अल्लाह पाक इन मदारिस को आबाद रखे. बहरहाल वी हैड सम लेडीज बयान एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज गुड टर्न आउट. लेडीज बयान मस्जिद उमर में ही मेरे ख्याल में लेडीज बयान था. पीछे पूरा सेक्शन है, भर गया था लेडीज से. तो लेडीज में माशाल्लाह पर्दा भी है, हिजाब भी है. जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वो दूसरी चीजें भी होती हैं, बेपर्दा भी होती है, लेकिन माशाल्लाह दीन अभी जिंदा है जाम्बिया में. फिर वहां पर खाने पीने में तो वो गोश्त ही गोश्त खाते हैं, हमको भी गोश्त ही खिलाते हैं. चॉप्स खाओ और बीफ खाओ. मैंने कहा भाई हमारा कोठा कमजोर है यार, वी आर वीक यार, डाइजेस्टिंग इज हार्ड, लेकिन वो ये सब खिलाते थे तो फिर ढीले पड़ गए. ये इसने पेट ने भी कहा कि बस करो भाई, लाहौल वाला कुव्वत, और क्या डाल रहे हो ये सब. तो कमजोर पड़ गए. दस्त आना शुरू हो गया, डायरिया हो गया, बुखार आ गया, फीवर हो गया. वहां से जब निकले हैं तो मैं बिल्कुल ढीला था. साउथ अफ्रीका गए तो एक पहले दिन के लिए ढीला था, दूसरे दिन भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने बड़ा करम किया. साउथ अफ्रीका, third country we went. Alhamdulillah, when we arrived there, Yusuf Bhai Dana had, organized everything. Khurshid Bhai came to pick us up, and with him was his father-in-law, 2 cars. We went to his Khurshid Bhai. Khurshid Bhai is from Deoband, और उनकी शादी वहाँ मौलाना इब्राहिम पांडोर साहब ने कराई. Because he used to do khidmat of Hazrat Mufti Mahmud Sahab and Maulana Ibrahim Pandoor Sahab in Deoband. Used to wash their clothes and do all their work and all running around. तो मौलाना इब्राहिम पांडोर साहब ने उनको वहाँ बुला लिया. वो कोई जवान लड़की थी. Her husband died in accident or something. She had 1 daughter as well. So मौलाना इब्राहिम पांडोर साहब arranged कि तुम यहाँ आ जाओ, वीजा वगैरह करके उसके साथ निकाह करा दिया. माशाल्लाह उसको, they have 2 kids of their own, and he's looking after the first daughter as well. All together, his father-in-law is also a very good person. Khurshid Bhai works in Darul Mahmudiya Springs. वहाँ पर बच्चों की खिदमत करते हैं. वेरी नाइस पर्सन, वेरी खिदमत गुजार. हमारे यहाँ भी वो फिर मालिश करने के लिए आधा घंटा मालिश किया हमको, पूरा सर हल्का कर दिया, बॉडी वॉडी सब. मैंने कहा यार खुर्शीद भाई तुम तो बहुत अच्छा मसाज करते हो यार, वहां जाओ यार मसाज करते रहते. तो बहुत रिलैक्सिंग, बहुत खिदमत गुजार, हर काम करने के लिए तैयार. हमारे यूसुफ भाई के साथ बहुत मोहब्बत, और माशाल्लाह यूसुफ भाई भी उनका बहुत ख्याल करते हैं. बहुत खिदमत की उन्होंने माशाल्लाह. और वैसे भी साउथ अफ्रीका वाले भी माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी में पीछे नहीं है. हमारे देसी भी वहाँ हैं माशाल्लाह, तो वहाँ से आए. हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं. मेरा खालाजाद भाई है मौलाना इस्माइल नाना बाबा है ना, उनके बड़े भाई यहिया नाना बाबा वहाँ हैं, फैमिली के साथ रहते हैं. वो फौरन उसी दिन आ गया स्प्रिंग्स में. वो बिनोनी में रहते हैं, हम स्प्रिंग्स में थे, 20 मिनट का रास्ता है. He came there, stayed with us throughout our safar, alhamdulillah. He is the one who took me to, क्या है यार, नाम याद नहीं आ रहा. कहाँ हमारे, मेरी वाइफ जो है ना, उसके 3 चाचाजाद भाई वहाँ रहते हैं, मकफैनी या क्या नाम है. तो लंबी ड्राइव है, 4.5-5 आवर्स यहाँ से लंदन जैसी, और सिंगल रोड. कहीं कहीं डबल रोड भी आते हैं, अक्सर सिंगल रोड है. और ही टुक अस देयर अल्हम्दुलिल्लाह आराम से. तो यहिया वाज विद अस. माय मदर्स mama's son is also there, Maulana Hanif Babu Sahab. He teaches in Spring Darul. He was also with us throughout the day. तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार भी बहुत वहाँ, दोस्त अहबाब भी बहुत, और यूसुफ भाई दाना is there as well. So we had a good time, alhamdulillah. And on top of that, वहाँ की हालत अच्छी. Even those who came from India, mashallah, they're also doing business. They are well off as well. तो
हालत मुसलमानों की अच्छी है, अल्लाह पाक has kept them in a good condition. May Allah preserve and protect them. And there's lots of madaris there as well. We couldn't visit all the madaris. We only had 4 days. So we went to Makweni, and then we came in the morning. From after Fajr, we set off 6 o'clock. 10:30, we got to Darul Zakaria Park. We met Hazrat Mufti Shabir Saluji Sahab. उन्होंने कहा हमारे साथ खाना खा लो, तो 11 बजे we had some biryani with him, mashallah. May Allah reward Mufti Shabir Sahab. And when we went to Mufti Razaul Haq Sahab, and Mufti Razaul Haq Sahab gave us some kitabs as well, alhamdulillah. Then we went to meet Maulana Abbas Sarigat Sahab. We walked around the madrasa, nice big madrasa. There's about 45, 50 kids in Dora, mashallah. And 700 students studying there in Darul Zakaria. From there we went to क्या कहते हैं, जमीयत उलमा ऑफिस. माशाल्लाह जमीयत उलमा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, खिदमत कर, अल्लाह उनकी खिदमत कबूल करे. मौलाना इब्राहिम भाम साहब, मौलाना अहमद मियाँ साहब, अनदर उलमाए किराम, मौलाना पांडोर साहब. तो बहुत काम हो रहा है. They are more into government and that level. Mawlana Ibrahim Baham Sahib, that clip that came a few days ago. MashaAllah, he's doing wonderful work. Allah accept his khidmat. Sometimes we wish we had one Mawlana Ibrahim Baham Sahib here. हमारी जमीयत भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती जैसे वहाँ की स्ट्रॉन्ग है. Their जमीयत was established in 1928, I think. From then on, माशाल्लाह, बहुत पुराना है, 1928. 100 साल के करीब उनको हो गया, 1923 शायद. तो अभी उनका 100 years फिनिश हो रहे थे. मौलाना अरशद मदनी साहब भी गए थे वहाँ, तो 7 साल उनका जलसा भी हुआ. तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी, दे डूइंग गुड खिदमत. May Allah accept their khidmat. We sat them with them and we had to have lunch with them as well. So डबल लंच हो गया उस दिन. तो फिर जोहर पढ़ी उनके साथ. वहां से फिर हम निकले. हमारा बिनूनी में मस्तूरात का बयान था 3 till 4. तो वहाँ हम आए, जरा सा 10-20 मिनट जरा सर रखा, थके हुए थे. एंड देन वी वेंट फॉर लेडीज बयान. अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज बयान भी बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड टर्न आउट. और वहाँ से फारिग हो गए, फिर थोड़ा आराम किया. फिर शाम को एक और मस्जिद में बयान था, बिनोनी में, मस्जिद नूर में. वहाँ पहुँचे. वहाँ पर I said yesterday that I got there a bit earlier before Maghrib. I was sitting down thinking about what to talk about, what to be doing on, and mazameen start coming in my mind. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqeen. Sidq fil ahwal, sidq fil aqwal, sidq fil af'al. सोच रहा हूँ कि यार ये मज़ामीन इतनी तेजी से क्यों आ रहे हैं. फिर नमाज के बाद पीछे देखा तो मौलाना इब्राहिम पांडोर साहब बैठे हुए. मैंने कहा ये उनकी बरकत है. दिस इज तवज्जो ऑफ मशाइख, along with तवज्जो of our हजरत मौलाना बिलाल साहब. बिकॉज आई आस्क्ड हजरत थोड़ी तवज्जो डाल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बयान भी करना है, तो हजरत की दुआएं, तो बुजुर्गों की दुआएं पीछे से सहारा होती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा रहता है. मैं हमेशा याद करता हूँ, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इब्न सुरैश, अबुल अब्बास इब्न सुरैश was a very good speaker. Someone asked him, where do you get all these mazameen and these speeches from? And he said, it's dua of my Sheikh Junaid Baghdadi. If it wasn't for him, I wouldn't be anything. It's his tawajjuh. रूहानी तवज्जो होती है ना, ये बहुत इफेक्ट करती है. Once Hazrat Junaid Baghdadi Rahmatullah Alayhi came to Ibn Suray's house. Now he didn't tell him. Ibn Suray was doing something and he got a feeling in his heart that, my Sheikh Junaid Baghdadi is outside, I should open the door. And he said, it was just a stray thought. Then again, second time. But he just kept on working. And then again, third time. Now he thought that this is something here. He just stood up and opened the door. Sheikh Junaid Baghdadi was staying there. And he said, why didn't you open the first time? This is, tawajjuh of mashayikh. And this tawajjuh can be felt. When our Hazrat was alive, I used to feel that tawajjuh. When Hazrat sent me to Canada, first time, 2002, and I used to do tafsir, I was thinking, where does all this tafsir come from? Then I realized it's Hazrat's tawajjuh. Hazrat was in Medina, but his tawajjuh was working from Medina Sharif. And I also used to think, if my Hazrat was here, then I would have been able to do tafsir. But because Hazrat was in Medina, he was working from Medina Sharif. And I also used to think, if my Hazrat was here, then I would have been able to do tafsir. But because Hazrat was in Medina, he was working from Medina Sharif. And I also used to think, if my Hazrat was here,
What type of bayan would he do? He would do this type of bayan. I would do that type of bayan. Because my existence was nothing. It was the existence of Hazrat. His tawajjuh, his du'as. So, mashayikh, you have to stay connected to them. Their tawajjuh is something special. And that does have an effect, whether you realize it or not, but it does have a profound effect on your personality, on your behavior, on your akhlaq, on your character, on your even on your speech, and in your bayan, in your wa'az. It all comes from the tawajjuh of our mashayikh. So, Alhamdulillah, Hazrat Maulana Ibrahim Sahab's barakat was there. Mufti Mahmud Sahab's Janashin. He is the Janashin of Mufti Mahmud Sahab. All Mufti Mahmud Sahab's khulafa respect him, and they all get together in Ramzan. This year, Hazrat is going in Bangladesh and is spending Ramzan there. Thousands of people there. Someone was saying me, Hazrat Maulana Ibrahim Sahab is very humble. He said during COVID, right, he was staying in the masjid with very few people, but his ma'mulat were exactly the same as those which would be among thousands of people. No difference whatsoever. Bayan, ma'mulat, ta'aleem, zikr, nasihat, advices. Maulana Ibrahim Pandor was a very humble personality. So, Alhamdulillah, Maulana Ibrahim Sahab was there. We did bayan in the Bironi Masjid. And we went to visit Mufti Mahmud Sahab's grave twice. First, when we were going to Makfeni, or what was the name? First, Yahya told me that Mufti Mahmud Sahab's grave is just close by, off the motorway. I said, come on then. A few minutes late, we'll go to Mufti Mahmud Sahab's grave first. Went there, did Fatiha, and then we moved forward. Similarly, when returning, the next day when we went to, on the third day when we went to meet Mufti Maulana Ibrahim Pandor Sahab before leaving, went to Mufti Mahmud Sahab grave first, Alhamdulillah. Our Ustad, I studied with him, Rasmul Mufti, Al-Ashbab al-Nazair. I did Mashq of Fatawa for 4 months. Then Mufti Sahab had to go to South Africa. So Mufti Mahmud Sahab is my Ustad. I don't call myself Mufti, but I did Fatawa with him, Alhamdulillah. And Mufti Mahmud Sahab is Mufti Mahmud Sahab. He used to give us questions. We had to write answers. Sometimes he would cross them off. Nope, write it again. So we have to write it again. And he said, now this is the right answer. So Mufti Mahmud Sahab is our Ustad. Alhamdulillah, we visited his grave, did some Fatiha. And every day I used to do Isal Sawab whilst I was there to Hazrat Mufti Mahmud Sahab. And also, I remembered Maulana Yusuf Tutla Sahab as the Sheikh's Khalifa, other Khulafa, Nakhudas from South Africa. There's about 7-8 Khulafas of Hazrat there. And also by Padia Sahab, Amir of Jamaat Tabligh. I met him when I went with Sheikh Yunus Sahab there. Very nice person and very hasmukh, khush mizaj. So we did Isal Sawab for him as well. And other mashayikh, whoever we remember. So this is how our journey moved on. We did bayans here and there. Jummah Masjid, I mentioned in Mayfair, Jummah Masjid, mashallah, very large masjid. They said about 2,800 to 3,000 people come here for Jummah, alhamdulillah. Large masjid, there's large balcony and rooms and everything is full, alhamdulillah. So lots of Somali brothers who've come there from Somalia and African brothers had to do bayan in English. Alhamdulillah, English में बयान किया. फिर कहीं और जहाँ गए, मौलवी साहब बयान करो, नो प्रॉब्लम, बैठ गए कुर्सी पे, बोलना शुरू कर दिया, बातें ही करनी है. लास्ट बयान एज वेल, आखिरी नसीहत, फाइनल नसीहत वहाँ स्प्रिंग्स में. मैंने कहा हम यहाँ रोज नमाज पढ़ते हैं, स्प्रिंग्स वालों की खिदमत नहीं की है. वहाँ दावत थी हमारे रिश्तेदारों के यहाँ, हमारे भाई हैं वहाँ पर, तो उनके यहाँ हमारी माँ की तरफ से रिश्तेदार हैं, हमारे मामू के बेटे हैं, तो उनके यहाँ माँ के मामू के बेटे हैं, तो उनकी यहाँ दावत थी. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बयान हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा. अल्लाह कितने मेहरबान हैं, पूरे सफ़र में हमको सेहतमंद रखा, सलामत रखा, खिलाया पिलाया, साफिरू तसिहू तगनमू, शॉपिंग वॉपिंग भी किया, बच्चों के लिए तोहफे तहाइफ लाए. वहाँ जम्बिया वाले सब पापड़ी का बहुत देते हैं, वो पापड़ी का भर के ले आए, वजन उठा के थक गए, कमर भी सीधी हो गई, लेकिन वो सब चीज़ें लानी पड़ी. वहाँ साउथ अफ्रीका जम्बुक अच्छा मिलता है, जम्बुक ले आए हैं, तो वो समझिए कि है इस किस्म की चीज़ें जो वहाँ की ख़ास चीज़ें हैं, वो ले आए हैं. अल्लाह पाक जो है बरकत नसीब फरमाए. हमारे हाजी यूसुफ दाना साहब was the रूह रवां and he was the organizer of the whole trip. He paid for my trip. May Allah reward him in this dunya and in akhirat. और जो कुछ भी खैर वजूद में आई, he will get the sawab as well of all these bayans. And as I mentioned yesterday,
we learned from Maulana Arshad Madani Sahib that we make dua. Whoever had muhabbat with us, Allah have muhabbat with them. Whoever allowed us to stay in their house, Allah allowed them to stay in Jannat. Whoever fed us, Allah feed them in Jannat. And whoever was kind to us, Allah be kind to them throughout the whole journey. जिन्होंने भी जिस तरह भी हमारे सलूक किया, अल्लाह पाक सब कुछ ज़ाय खैर दे। तो वहाँ पर जाम्बिया में लोग सुनते हैं बयान हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक खाला आई, मौलाना साहब, I never miss the Shabe Jummah Thursday night majlis. I listen to Maulana Bilal Sahib's bayan, even if it's so late at night, I still don't go to sleep without listening to the majlis. And she said, I brought some honey for Maulana Bilal Sahib. And Maulana Bilal Sahib said, if someone sends honey for me, he should send 2. So I brought 2 bottles. Will you take it? I said, no problem, I will take it. तो देखिए वो खालाएं वहां भी, बूढ़ियां भी सुनती हैं हज़रत मौलाना का बयान, कितना फायदा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये तो हमारी जरूरत है, मजबूरी है। वहाँ साउथ अफ्रीका में जरा इसका थोड़ा इख्तिलाफ है उलमा में। कुछ उलमा कहते हैं कि तस्वीर है, मना है, दूसरे उलमा कहते हैं कि मजबूरी है, जायज़ है। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल मोर देयर, कहीं मुझ पर कोई सिक्का लेबल न लग जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी हिफाजत की। बहरहाल दोनों तरफ उलमा है, उनकी भी राय है, वो कहते हैं कि वे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज देयर ओपिनियन, वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। और इस तरफ भी उलमा है, दे आल्सो से भाई इट्स मजबूरी, इट्स नेसेसिटी, इट्स अ नीड, सो वी रिस्पेक्ट देयर विश एज वेल। आवर मैंने आई सैट विद सम उलमा, आई हैड टू एक्सप्लेन टू देम, दे आस्क्ड मी इन मलावी, मौलाना साहब ये क्या है, यू आर अ लिबरल आलिम, सो वी वांट टू हियर योर व्यूज। मैं लिबरल नहीं हूँ यार, आई एम ट्रेडिशनल आलिम। जो तस्वीर की वजह से लिबरल थोड़ा हो गया मैं। वो लिबरल तो डॉक्टर क्या नाम है वो नौमान अली खान और जाकिर नाइक और ये सब लोग लिबरल हैं, मैं थोड़ा उनकी जैसा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने सलफ़े सालिहीन ट्रेडिशनल तरीके पर हैं। तफसीर भी हम उसी तरह से करते हैं, मॉडर्न तफसीर नहीं करते, हम ये पुरानी तफसीर करते हैं, सही तफसीर करने की कोशिश करते हैं। एनीवे, आई सेड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन 2006। कितने साल हो गए 2006 से? 17 साल हो गए ना, 18 साल। And I started after taking permission from my Hazrat Maulana Yusuf Mutala साहब। हमारी जो तफसीर है, डॉक्टर मजहरुद्दीन साहब एंड गजनवी साहब, भाई शहजाद, they suggested, Maulana साहब, we do audio recording, we should do video as well. Okay, go on then. I asked Hazrat said, okay, give me the go ahead. And in fact, Hazrat was intending to start a TV channel as well, लेकिन फिर उसकी कुछ शक्ल बनी नहीं। Sheikh Yunus Sahib, maybe I don't know how many years ago, 25-30 years ago, once sent a message to our Hazrat that यूसुफ से कहो कि अपना टेलीविजन चैनल शुरू करे। कादियानियों ने टेलीविजन के जरिए हजारों को मुर्तद बना दिया है। Start TV channel, Qadianis have made thousands murtad through this channel. In London, in one place, Sheikh, I remember exact words of Sheikh. Sheikh said, हर जमाने में बातिल जिस कदर ताकत के साथ सामने आया है, हक भी उसी कदर कुव्वत के साथ मुकाबले में निकला है। ये क्या है कि इस जमाने में बातिल दंदनाता फिर रहा है और हक किनारे किनारे चल रहा है। ये भी तो हक को साबित करने के लिए एक तरीका है, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। Personally, Sheikh didn't like tasweer, he didn't like videography, but he said it is need, necessity, use it for the promotion of deen and hifazat of deen, tahaffuz of deen. So हमको शौक नहीं है, we don't like, we've not got the desire to show off, but the only reason why we're using this videography is for propagation of deen. अब देखो, in this day and age, everybody's got TV in their homes, and when they see your face, that's when it's more appealing, and they listen more, they watch, observe, they learn more. बहुत सी चीजें हमारी एक्शन से, मूवमेंट से सीखते हैं। तो इसलिए we feel it's only a necessity, and at the same time nastaghfirullah, Allah forgive me if I made a mistake, अल्लाह हमको माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे अगर हमसे गुनाह हो जाए, लेकिन ये मजबूरी की वजह से हमको करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा है। तो इसलिए मैंने हजरत के मशवरे से, शेख यूनुस साहब के मशवरे से उसके बाद इसको शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो रहा है, बहुत दूर दूर लोग मैसेज पहुंच रहा है, बहुत से लोग फायदा उठाते हैं, इसलिए हम ये करते हैं। वहाँ मैंने उलमा को समझाया, मैंने कहा कि भाई वहाँ तुम लोग
अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे हमारी तरफ से. दिस इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आवर साइड. दिस इज व्हाई वी कीप द कैमरा फोकस्ड ऑन मी ओनली ऑन द अदर कांग्रीगेशन, बिकॉज इससे जरूरत पूरी हो जाती है. तो जिस जरूरत पूरी हो जाती है माँ जरूरत ततकद्दरु बिक़द्रिहा, मजबूरी it will be limited to the necessity. You don't go beyond what is necessary. तो इसलिए we are using this और hoping अल्लाह पाक जो है इसको मुफीद बनाएंगे और कबूल फरमाएंगे. Anyway, these were some discussions with the ulama kiram there as well. I think we'll have to leave the tafsir today. Although I'm ready, but we've gone over time, so we'll do tafsir next week inshallah. ठीक है. आज तफसीर है वयसअलूनका माज़ा युनफिकून कुलिल अफ़्व. मैं बरकत के लिए आयत पढ़ देता हूँ. कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, verse number 219 of Surah Al-Baqarah. And we previously we talked about two things, intoxicants and gambling, and we explained in detail. Now Allah Pak is talking about وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Perhaps Allah is meant trying to say, don't spend your money on khamr and maisir. Spend your money where you should be spending, where it's necessary, yourself, your relatives, your parents, which we mentioned, and spend whatever is extra, left over, remainder, surplus to your needs. Allah mentioned before as well where to spend. Now Allah is mentioning what to spend. So we'll cover this bit inshallah next. After that, Allah talks about وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, some masail of yatim and the orphans. So masail of yatim will cover about yatims. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, in the next lesson inshallah. جزاكم الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. परवरदिगार आलम हमारे यहाँ उठना बैठना कहना सुनना कबूल फरमाइए. हमारी गलतियाँ कोताहियाँ सुस्तियाँ कमजोरियाँ माफ़ फरमाइए. अल्लाह अल्लाह हमारे पूरे सफ़र को कबूल फरमाइए. पूरे सफ़र में जिन्होंने हमसे मोहब्बत की आप उनसे मोहब्बत फरमाइए. जिन्होंने खिलाया पिलाया आप उनको खिलाइए पिलाइए. जिन्होंने हमको ठहराया आप उनको जन्नत में जगह नसीब फरमाए. जिन्होंने हमसे जिस तरह सलूक किया एहसान किया उसका बदला आप ही दुनिया आखिरत में उनको नसीब फरमाइए. अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआएं सुन लीजिए. हर खैर अता फरमाइए. हर शर से बचाइए. अल्लाह इन दोस्तों को भी बेहतरीन बदला अता फरमाइए और हमारी इस वेबसाइट को तफसीर रहीमी को भी कबूल फरमाइए. ये दोस्त अहबाब बेचारे मेहनत करते हैं. अहमद है, बिलाल है, जहीद है. अल्लाह जितने भी दोस्त हैं सबको उनकी मेहनत और मोहब्बत का बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाइए. टूटी फूटी दुआएं सुन लीजिए. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन. मैं भूल गया हमारे वहाँ पढ़ने के ज़माने एक दोस्त भी मिल गए, हाफिज गुलाम चुनारा, याद है ना? हाँ माशाअल्लाह, उनके साथ भी बहुत अच्छी मजलिस रही. वो तो हर जगह आते थे, बैठते थे, बातें होती थी, पुरानी यादें होती थी. आपको भी याद कर रहे थे, दारुल उलूम को याद कर रहे थे. अल्लाह उनको भी खूब बरकतें नसीब फरमाए. अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे. और आई फॉरगॉट टू टेल यू, आप लोगों को बुला रहे हैं, आप जल्दी जाओ वहाँ पर. हाफिज पांडोर हैं, अयूब भाई पांडोर हैं, जाकिर हैं, सब जाम्बिया टीम है. ऐसा करते हम सब लोग मिल करके एक दफे जाते हैं एक आध हफ्ते के लिए. पूरा ग्रुप जाएगा इंशाल्लाह, तो उसमें और मजा आएगा इंशाल्लाह. चलो जी.